Hello guys, I'm Dr. Ankit, Hi guys, I'm Dr. Marwa. and today we will have an integrated session on a very important and a complex topic, that is heart failure. So heart failure simple भाषा में क्या है? Remember, imagine करिए हार्ट बीट कर रहा है. हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसे हम बोलते हैं कार्डिक आउटपुट. लेट्स इमेजिन कार्डिक आउटपुट जो है वो मेंटेन नहीं है. कैन वी से वाइटल ऑर्गन्स पे इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होगी. सो दिस इज नोन एज हार्ट फेलियर. सो कैन वी से लेट्स से अगर ब्रेन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं होगा तो ब्रेन हार्ट को क्या कहेगा, सर आई एम मोर सुपीरियर ऑर्गन देन यू एंड आई नीड ब्लड एट एनी कॉस्ट. तो ब्रेन इस मरते हुए हार्ट को कहेगा साहब ज्यादा काम करो. सिमिलर टू इमेजिन करिए एक हॉर्स चल नहीं रहा और आप और उसे चाबुक मार रहे हो कि काम करो और करो. दिस इज व्हाट हार्ट फेलियर इज. सो लेट्स लर्न द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर. सो दे जस्ट इमेजिन देयर इज सम कार्डियक डैमेज विच इज डिक्रीजिंग कार्डिक आउटपुट, जिसकी वजह से ब्रेन से कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होंगे लाइक सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, एंड दिस सिंपैथेटिक डिस्चार्ज विल स्टिमुलेट द डाइंग हार्ट टू रिस्टोर द ब्लड प्रेशर. सो व्हाट विल हैपन, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा हार्ट पे, कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, हाइपरट्रॉफी होगी, रास एक्टिवेशन होगा थ्रू किडनी विच विल इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, एंड देयर विल बी वेजोकंस्ट्रिक्शन जिससे आफ्टर लोड और प्री लोड बढ़ेगा, हाइपरटेंशन और एडिमा जैसे सिम्टम्स होंगे. तो अगर हम बात करें इस इनिशियल स्टेज की, कैन वी से इस इनिशियल स्टेज में कार्डिक आउटपुट रिस्टोर हुआ, गुड फॉर द ब्रेन, बट डू यू थिंक इट इज गुड फॉर द हार्ट? द आंसर इज नो. This stage is known as compensated CHF, but what will happen to the heart? Heart और easily damage होगा. और डैमेज होगा तो एक स्टेज आएगी जब कार्डिक आउटपुट क्रिटिकली कम हो जाएगा. इस स्टेज को हम बोलेंगे डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर. तो सर व्हाई वी नीड दीज टू डिफरेंट स्टेजेस? पहले तो what I want to ask you guys, because I think all of you read this topic, is, and do comment in the chat box, because congestive heart failure will also have pulmonary edema and cardiogenic shock will also have pulmonary edema. So comment in the chat box without using chat GPT what is the critical difference between congestive heart failure and cardiogenic shock, because both of them are going to have pulmonary edema, so you need a differentiating factor, and I would like you to see your comments regarding what is the fundamental difference between the two. And when it comes to I can say decompensated heart failure, one thing I think which sir would always be teaching you, and you are anyway familiar, is that beta blockers would not be given, because you see the heart is beating very very fast, and if you want to give beta blockers it's like putting on the brakes, and therefore the clearance of pulmonary edema would not be happening. So we don't give beta blockers in a acute decompensated heart failure, and in the current edition of the textbook it does not use the word decompensated or compensated. It just says acute heart failure and chronic heart failure, and then there are two technical terms that we'll be discussing, HFpEF and HFrEF, that will be coming to subsequently. But yes sir, मतलब आपने बोला मैं 20 साल से बोल रहा हूँ. Yes, sir. तो आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप इसको एक्सप्लेन कर लो सर, वरना तो देखो हम लड़ते रह जाएंगे कि भाई मुझे इसको हार्ट फेलियर वाला टॉपिक मुझे बताना है. बट दीज गाइस हैव ऑलरेडी लिसन टू मी टॉकिंग अबाउट फ्लेमिंगम क्राइटेरिया एंड यू नो डिफरेंशिएटिंग अबाउट लाइक लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर वर्सेस राइट वेंट्रिकल फेलियर. तो आपने बोल ही दिया कि सर मैं बूढ़ा हो गया हूँ. तो सर हम इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आप 20 साल से बोल रहे थे. सो दैट इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम यू ओनली. दैट is why we are teaching and passing us the knowledge. Sir, so the point is, initially can we say the cardiac output is restored, compensated form में हमें हार्ट को बचाना है क्योंकि ब्रेन पहले से ठीक है. बट इन decompensated can we say ब्रेन में insufficient amount of blood जा रहा है, so we have to increase the cardiac output further. Here we give an inotropic drug. So can you tell me the only oral inotropic drug given in chronic heart failure in late stages? It starts from the word D. It is obtained from a plant, that is D. purpura plant or D. lineata plant, which drug we are talking about. So now let's talk about, sir, what are the cardioprotective drugs we have in CHF. Easily याद कर सकते हैं एक mnemonic से, that is Sahibs. So first drug is sacubitril valsartan, जिसे हम बोलते हैं ARNI. Then we have ACE inhibitor, Pril वाले ड्रग और ARB sartans वाले. Aldosterone blockers, which is also known as mineralocorticoid receptor antagonists like spironolactone and eplerenone. We have vasodilators like hydralazine. We have a funny channel blocker, ivabradine. We have beta blockers and a very important class of anti-diabetic drug approved in CHF
is SGLT2 inhibitor. They will end with the word gliflozin. Now a very important point is सर ये सारे के सारे ड्रग जो हैं कार्डियो प्रोटेक्टिव है, हार्ट में मोर्टेलिटी कम करते हैं. बट सर व्हाट अबाउट बीटा ब्लॉकर्स? क्या सारे के सारे बीटा ब्लॉकर्स कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं सर? नहीं, ये तो आई थिंक आपके एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जामिनर इसी को सुनना चाहता है. दैट इज गोना बी द ड्रग्स विच आर वुड लाइक टू मेंशन हेयर कि विच आर FDA अप्रूव्ड, और इनमें से एक ऐसा है जो रिसेंट अप्रूवल है पर वो ऑब्वियसली US FDA अप्रूव्ड नहीं है. तो आई थिंक यू आर एनीवे फैमिलियर. मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल एंड कार्बिडोलॉल, एंड एडिशन डेटा वुड बी नेबिवोलॉल. But beta blockers, remember, they are given in compensated form या initial form. और अभी सर ने बताया that decompensated या फिर कार्डियोजेनिक शॉक में हम बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, वहाँ पे हम बीटा एगोनिस्ट देंगे फर्दर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने के लिए. बट हमें एक बात याद रखनी है, बीटा ब्लॉकर्स क्रॉनिक हार्ट फेलियर में देते हैं, बट क्या हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्रॉनिक हार्ट फेलियर में देते हैं? द आंसर इज नो. रिमेंबर, वेरापामिल और डेल्टियाजाम CHF में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि बीटा ब्लॉकर मोर्टेलिटी कम करते हैं, CCB लाइक वेरापामिल मोर्टेलिटी इंक्रीज करते हैं. सो सर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर you were talking about? Yeah, basically here you need to go for the ejection fraction part. If it's less than 40%, you will say HFrEF. If it's like 50 or more than 50%, then you will say heart failure with preserved ejection fraction. I want you guys to comment in the chat box what would be, because I think आपने कमेंट कर दिया होगा वो पिछला वाला क्वेश्चन, और नहीं किया है तो अभी दोबारा कमेंट करिएगा. हार्ट फेलियर वर्सेस कार्डियोजेनिक शॉक, I mean, you know, acute heart failure versus cardiogenic shock, the fundamental difference between the two, and that would let us know that whether you've gone through the main video at the moment or not. But yeah, this is a study where this is a video lecture where we're trying to integrate that stuff. So I finally would give you an answer, guys. I mean, cardiogenic shock mein there would be a multi-organ dysfunction that would be happening. I mean, there would be a renal failure that would be concomitantly present, which may or may not be present in a patient of congestive heart failure. And as far as hypertension is concerned, which is a silent killer, it will mostly result in a left ventricular hypertrophy. So because of the hypertrophy, at the moment I can say that the ejection fraction of the patient is preserved. But in this patient, if you have a hypertrophy of the heart, तो heart की ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई तो लिमिटेड है ना. तो if there's like a increased demand, the supply is less. Ultimately, like there would be a later stage में जाके decompensation occurring in a patient. But for heart failure with preserved ejection fraction and reduced ejection fraction, they'll always ask you in the exam what drugs would be used. So that's what sir will now enumerate in front of you. So let's first talk about heart failure with reduced ejection fraction. So आपने NYHA स्टेजिंग्स पढ़ी है, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन, जिसमें जैसे जैसे हार्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है हम एक एक करके ड्रग्स ऐड करना शुरू कर देते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द लिस्ट ऑफ द ड्रग. सो वी कैन स्टार्ट विद ACE इनहिबिटर और ARNI. Then we subsequently add beta blocker. We can give mineralocorticoid receptor antagonist like spironolactone, and SGLT2 inhibitor is a new addition. Now about diuretic, remember diuretic like loop diuretic, they don't have any mortality benefit. They are only given for symptomatic treatment of, let's say, pulmonary edema or congestion. So diuretic से mortality benefit नहीं है, सिर्फ और सिर्फ symptomatic. So here comes a very controversial question जो बहुत सारे बच्चे मारवा सर से पूछ रहे हैं, और इसी वजह से हमने सेशन भी रखा है. सर पहले क्या स्टार्ट करें, ACE इनहिबिटर के ARNI इन हार्ट फेलियर? I'll not say, मतलब मैं ऐसे बोलूँगा तो impression ये आता है कि because pharmaceutical companies are promoting it, that is why most doctors are prescribing ARNI. But then most of the time the peer review data says that ARNI is like the first line drug that we can be introducing in a patient. But yeah, at the same time, like the patient has to be, you know, tolerant to ACE inhibitors. So yes, we have a new drug, ARNI. Now the point is, अगर patient ARNI या ACE inhibitor से main problem है allergic reaction, and these ACE inhibitor and ARNI, they are not found to be effective in black race, especially African race. So is there any alternative to replace ARNI or ACE inhibitor? Yes, we have a combination of hydralazine with nitrate. So they both are vasodilator and they are preferred in cases of black race or African people, and if the people are found to be allergic to ACE inhibitor, because ACE inhibitor से bradykinin का level बढ़ता है, various allergic reaction like dry cough, angioedema, urticarias, they are seen. Now what about heart failure with preserved ejection fraction?
इनमें से आप कमेंट करके बताइए कौन सा ड्रग हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में देते हैं, पर प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में इस लिस्ट में से कौन सा ड्रग नहीं दिया जाता. सो वी विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन. सो अगेन, diuretics, they are given for symptomatic treatment, and here we have the best evidence with SGLT2 inhibitor like canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin. ARNI, MRA and ARBs are also add-on drug. So the drug which is avoided in heart failure with preserved ejection fraction is beta blockers. And here I would just like to say that these are the AHA guidelines, but according to Harrison, because that's the book that we follow, there, like for heart failure with preserved ejection fraction, even in the 22nd edition, he has persisted with the date of the 21st only, and he's mentioned ARNI as like the main drug, and he has not spoken much about the SGLT2. Though he has talked about benefit, but he has written ARNI above SGLT2 inhibitors. So slight discrepancy will always be there, but yeah, what I want you to understand at this moment is that there's certain class of drugs that will be using for heart failure with reduced ejection fraction versus that in preserved ejection fraction, and the order in which we shall be using will also be slightly different. So we are planning to come up with an integrated series. In fact, we will be coming out with an integrated series that's already on the cards, where like we'll be going into much more depth and detailed analysis, and this was just a trailer to get you an insight into like the routine chit chat that Sir and me would be doing, but like we'll do a more in-depth analysis, and we take care of like all the drugs in cardiovascular system in a single go, or like drugs acting in CNS in a single go. So that would help you revise the two subjects together, and there we'll have like a much more, I would say, interactive discussion. But yeah, I mean, keep the comments going, guys. And sir, if you want to add few words. So, sir, this is all the guidelines of heart failure have been changed drastically in 5 to 10 years. So, remain updated with heart failure guidelines, because यहीं पे सवाल पूछते हैं, यहीं पे आपको घुमाया और ट्विस्ट किया जाता है. So, this is all from our side. So, thank you very much. Thank you, guys.